जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने एक बहुत ही पुराने साथी, एक सीनियर के साथ अभी गुफ्तगू में होऊंगा, जिनसे मेरा पहला राब्ता हुआ था सन 2005 में नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जी हाँ, मणिपुर में। और वो हार्डकोर स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर हैं, ये हार्डकोर पैरा कमांडो रह चुके हैं। और आप सुनिए, एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन, पैरा कमांडो एनएसजी की बटालियन कमांड करते हैं, तो जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है जितने लोग फौज में जाना चाहते हैं और जितने लोग फौज में भी हैं उनके लिए भी, और मुझ जैसे लोगों के लिए भी, हर एक के लिए। आइए गुफ्तगू करते हैं जो तारुफ की कोई मोहताज नहीं है बिल्कुल भी। He has had an illustrious service career, and he hung up his boots recently in June last year, not even a year back, in fact just about 6.5 months back. Let's come straight away and let's converse with Colonel Kashyap. Sir, Jai Hind, sir, and thank you very much for taking our time, sir. Thank you so much, Ali. In fact, it is an honor and a privilege to be part of this show. I'm really glad you called me here. Thank you, sir. Very kind of you, sir. Very kind of you. Sir, शुरू से स्टार्ट करते हैं आपके सफर से। Sir, what motivated you to join the academy? आपकी प्रेरणा कौन थे सर? मेरे पेरेंट्स, या दो Right. वो अरुणाचल गवर्नमेंट में वो थे। माय फादर वाज अ डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर इन द अरुणाचल गवर्नमेंट, माय मदर वाज अ टीचर। लेकिन हमारा फैमिली बहुत ही पेट्रियोटिक फैमिली होता था, एंड सर्विस फैमिलीज जैसे नॉर्मली होते हैं। और मेरे फादर एक वो होते थे, ही वाज अ डाई हार्ड आर्मी ऑप्टी, लेकिन ही गॉट अ टेम्परेरी रिजेक्शन, और फिर उसके वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे। और फिर मेरी ग्रैंड मदर ने उनको बिल्कुल अलाउ नहीं किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट ऑलवेज हैड इट इन हिम कि थ्रू अस वो अपनी फौज की लाइफ जिए। एंड या आई रिमेंबर शिलोंग में मेरा एक दोस्त होता था, वेरी क्लोज फ्रेंड, हम हॉस्टल में होते थे। एंड तब तक मुझे इंडिया के बारे में नहीं पता था। ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू थिंक कि हाँ, आर्मी वगैरह अच्छा है। एंड दिस गाय आउट ऑफ नोवेयर ही केम अप विद दिस कि नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है एक, ऐसे होता है वैसे होता है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था, बट अगेन द नाम से अच्छा लगा था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग। एंड या एंड दैट स्टेड। और फिर वी लैंडेड अप एनडीए, एसएसबी दिया, सिलेक्ट हो गए और ज्वाइन कर लिया। वाओ। एंड तब तक आपको मालूम था कि आप स्पेशल फोर्सेस में जाएंगे, आप कमांडो बनेंगे, या आपको ये था कि फौज में जा रहे हैं, इंडियन आर्मी में जा रहे हैं? इनिशियली जब मैंने एसएसबी दिया था, आई वाज अ नेवल ऑप्टी, नेवी। तो आई हैव मेंशन्ड दिस अदरवाइज आल्सो। मुझे ना आर्मी से डर लगता था। फ्रैंकली यस, seriously, I used to be scared, and I could not come to terms with the fact कि आपको शूट करेगा to kill you, they're going to attack you। हम सारे मूवीज वगैरह देखते थे उस समय, और मूवीज वगैरह में हमेशा वो आर्मी वाला बेचारा मर ही जाता था। इट्स नाउ दैट गुड मूवीज आर स्टार्टेड कमिंग, नो। तो किसी का लेग एम्पुटेट हो रहा है, किसी का हाथ एम्पुटेट हो रहा है, एंड यू सी दोस मूवीज एंड दैट इज व्हाट लास्ट की यार, ये तो खत्म वाला केस है। एंड देन उस समय नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी वाज इट एट इट्स पीक, एंड जेएनके में इंसर्जेंसी वाज एट इट्स पीक, एंड हर दिन आपको इंसिडेंट सुनाई देते थे। तो आई वाज स्कैर्ड कि आर्मी ज्वाइन करूंगा। तो आई हैड ऑप्टेड फॉर नेवी। सबने बताया फोर्सेस अच्छा है, अच्छी यूनिफॉर्म होती है, सब कुछ अच्छा है, ही विल हैव अ गुड लाइफस्टाइल, तो इसको आप डिफेंस फोर्सेस तो ज्वाइन कराइए, बट लेट हिम गो टू अ फोर्स जहां पे शायद आई एम सॉरी फॉर द नेवल ऑफिसर्स वो गोइंग टू वॉच दिस, बट देन इट यूज्ड टू बी लाइक दैट। सो हमने सोचा कि हाँ, ये अच्छा है, तो नेवी ऑप्ट करते हैं। But when I joined NDA, I used to read books, and then I came across this. I have again been mentioning number of times. I read a book on genocides, and on that book, what was most touching for me, which I'll never forget, was the Baramulla incident. Right. The incident why, yeah, we still we have Kashmir. Kashmir is part of a country as I see it. It's because of that Baramulla. These Pakistanis, they reached Baramulla and they spent one whole day raping every woman that they could find, killing every man that they could lay their hands on. And that is why, and
The same day, Raja Hari Singh, he signed the instrument of accession, or Indian Army landed. That's why we have Kashmir. Again, the Bangladesh issue. 1971 में Dhaka में, every women they could find, they raped, every man they killed. Immense atrocities. So that is when I went across this, then I realized कि भैया, this is very serious business. If your country is defended by people who are not that motivated, ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. जस्ट लुक एट व्हाट हैज हैपेंड अभी हमास के साथ. हमास ने जो किया है इजराइल के साथ. सो आपकी अगर आर्मी स्ट्रांग नहीं है तो यही होगा. और अगर हम आर्मी में हमेशा ये चाहें कि वही जो लोग कहते हैं कि भगत सिंह जन्मे लेकिन पड़ोसी के घर पे, वी वांट समबडी टू गो एंड फाइट देयर, बट खुद नहीं जाना चाहते हैं. सो समहाउ आई गॉट ओवर दैट फियर. आई पुश माई सेल्फ टू गेट ओवर दैट फियर कि नहीं, मैं नहीं, आई विल गो इनटू एक्शन एंड आई विल गो इनटू द वर्स्ट एक्शन and I'll do whatever it takes to defend my country. I seriously, that is what was my motivation when I joined the Special Forces. See, already your fan club is messaging you already. आपको अभी I heard the SMS. ये फोन है कि SMS है कि already people are इतना आपको चाह रहे हैं सर. सर ये आपने बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूब फरमाया है. You know, a boy, young boy who joined the NDA, who was little skeptical about joining the army कि भाई एक्शन होगा, फिल्मों में दिखाते थे, opinionated from the media, joins the Special Forces, and not just a para commando but also went to the National Security Guard, the NSG, and he commanded a battalion over there. Wow, this is something, sir. It's very, very inspiring. Sir, फिर आपने after NDA, when you went to IMA, had you made up your mind at that time that कि मैं SFE join करूंगा? No, NDA में I was a hardcore Special Forces opti. Especially Okay, sir. हमारे instructors, Colonel Panging, Hemanto Panging was our instructor from. Oh yes, of course. Yeah, he was an instructor. He was not just an instructor. He was our Scotty in Mike Squadron. And Lord. the cool, and then he would tell us stories, and you could just sit there and keep listening to his stories. आप उसकी बातें सुन सकते हैं. Yeah. And बाकी instructors. Where's Panging, sir? I'm sorry. I think he's retired last. I'm not too sure. Okay, Seriously. okay. I've been too busy. It's bad of us to be too busy with our own life. But then I don't know where sir is. Yeah, but then he had a major role. मतलब उस समय हमारे सर्विस क्लासेस सर लेते थे. एंड किस आई रिमेम्बर उनका एक इंसिडेंट, एक जो हमारे सर्विस क्लासेस में कहते थे कि यार दुनिया भर की फोर्स जा करके हर दिन जाते हैं एम्बुश में बैठते हैं, हर दिन जाते हैं एम्बुश में बैठते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. हम एसएफ वाला एक बार जाएगा, मिलिटेंट मारेगा और वापस आके मुर्गा खाएगा. तो दैट वाज लाइक कि हाँ, कम जाओ, अच्छा से जाओ, और वहां जाओ जहां कोई नहीं जाता, मारो और वापस आओ. And so what I was saying is मैं एनडीए में स्पेशल फोर्सेस ऑप्टी होता था, बट एनडीए में आई हैड इंजरी, आई हैड अ नी सर्जरी. वो हायर टेस्ट के लिए फिफ्थ टर्म, एंड ऑफ टर्म में हायर टेस्ट के लिए आई वाज टू अपीयर. आई कुड डू ऑल द टेस्ट, एंड हैंड स्प्रिंग का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था मैं अपने स्क्वाड्रन को, एंड आई जस्ट माय नी स्नैप्ड. So my uncle was in AIMS. It was good कि army allowed me to get myself operated in AIMS. AIMS से मैं operation करा के I joined back NDA. So I was very scared कि इस knee के साथ I was just somehow trying to pass out, कि मैं pass कर लूँ. उस समय आपको पता भी नहीं चलता. And then आपको यार special forces का probation है, पता नहीं क्या क्या कराएंगे. नहीं, it is one of the hardest and the worst thing that can hit you. And आप उसके लिए तैयार हैं नहीं हैं, and with a knee like that. तो इसीलिए IMA से I had not opted. I may say I had opted for Gurkhas. I got, but I was a casualty in that manner. I got 3 JAT. Or 3 JAT, I'm sure you are already aware, 3 JAT is one of the finest platoon in the army. 3 JAT has got the record for deepest penetration into Pakistan. Pakistan के अंदर सबसे deep जाने का 1965 वॉर में, not just 1965, आज तक का रिकॉर्ड है 3 JAT का. इछोगल कनाल जो पाकिस्तान का एक कनाल है डिफेंसेस के लिए, जिसके लिए जिसको क्रॉस करना इम्प्रेग्नेबल मानते हैं, जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता है, उसको 2 बार क्रॉस किया है 3 JAT ने. और बाटापुर शू फैक्ट्री पहुंच गए हैं अंडर ब्रिगेडियर डेस्मंड ई हेड. सो वो यूनिट में मैं कमीशन हुआ,
मेरे लिए बहुत मुश्किल था इतनी अच्छी पलटन, गॉड वाज़ सो काइंड कि इतने अच्छे पलटन में आपको भेज दिया और आप वहाँ से स्पेशल फोर्सेस में ऑप्ट करके आए। बट हाँ, उसके अच्छा। बाद मैं कोर बैटल स्कूल गया, 15 कोर बैटल स्कूल, वहाँ मिल गए मेरे साथ कर्नल जॉन डी ब्रिटो। Oh, ही boy, वाज़ he's द कमांडर। another फ्रॉम hardcore. 9 Yeah, अनदर yeah, अनदर लीजेंड। यस, यस, yeah, अनदर लीजेंड। फिर अगेन yeah. उनकी बातें सुन कर के मतलब जो भी आपके दिल में शंकाएँ या वो था सब खत्म हो गया। फिर लगा कि भैया एक लाइफ है, जो करना है इसी में करना है। एंड आई ऑप्टेड फॉर स्पेशल फोर्सेस। मेरे कुछ कोर्समेट्स और थे, उस समय आपको पता है आपने भी उसी सीक्वेंस में आप गए हैं। एज़ ए आर्मी ऑफिसर आप अपने सीओ से पूछे बिना कहीं भी वॉलंटियर करना, एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट के लिए वॉलंटियर करना बहुत बड़ी चीज़ है। सो मैं जी, और जी। मेरे कुछ कोर्समेट्स जो वहाँ पे कोर बैटल स्कूल में गए थे, हमारे लिए ये शक था हमें कि सीधा हमें यहीं से ऑप्ट कर दें, कर्नल ब्रिटो साइन कर दें और आप चले जाओ, या आप अपने यूनिट में जाएँ, अपने कमांडिंग ऑफिसर को से रिक्वेस्ट करें और फिर उनके परमिशन लेकर के आप जाएँ। मेरे कमांडिंग ऑफिसर बहुत अच्छे होते थे, लेकिन फिर भी मेरे से रहा नहीं गया। मैं सोचा नहीं, अ, अपने लाइफ़ के डिसीज़न अपने हाथ में होना चाहिए। आई शुड नॉट बैंक माय लाइफ कि अगर मेरे को स्पेशल फोर्सेस जाना है, मौका मिल रहा है, लपक लो, रादर देन यू वेट कि क्या पता उनके दिमाग में क्या है। नहीं। सो आई ऑप्टेड फ्रॉम देयर एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड इन 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस एंड Oh, sir. आई वुड से माय लाइफ चेंज्ड। यस, यस, यस। Lovely, sir. Lovely. Sir, how long did you serve with three Jat, sir? Jat Bhagwan, Jat Balwan, Jai Bhagwan. जय Sir, भगवान, जय भगवान। आई वाज़ sir. देयर फॉर अबाउट 3 मंथ्स, 3 महीने। 3 months, sir. एंड आई वाज़ Sir, sir. कमीशन्ड, व्हेन आई वाज़ कमीशन्ड हम उरी में थे, अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। Okay, sir. Okay. Sir. या। And so 3 months you were with three Jat, and उसके बाद sir आप SF में आ गए. Sir, could you tell us a bit जी। about your probation? I mean, a lot of youngsters would be eager to know about how the probation is और कैसे क्या होता है और क्या होगा, sir. या प्रोबेशन, जितनी भी आपने डरावनी चीज़ें सुनी हैं, वो सब होता है, वो सब सच है। और जितना आपने सुना है, उससे ज़्यादा ही होता है। तो इफ आई हैव टू मेक इट शॉर्ट, इट विल बी दैट कि येस, प्रोबेशन इज़ बैड, प्रोबेशन इज़ वर्स्ट। एंड क्योंकि वो इतना हमारे टाइम पे 6 मंथ्स का होता था, ऑफ कोर्स 6 मंथ्स में 3 महीने में वो मेन सिलेक्शन पार्ट ऑफ इट वुड गेट ओवर और फिर आपको ऑपरेशंस में ले जा करके ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग कराते थे और आपको यू गोइंग आउट विथ योर टीम, जिस टीम के साथ आपने रहना है, उसके साथ। तो दैट वाज़ लाइक दैट। बट प्रोबेशन वाज़ टफ एंड इट हैज़ टू बी टफ। प्रोबेशन हैज़ टू बी टफ। प्रोबेशन आप स्पेशल फोर्सेस के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। आप किसी एंड स्पेशल फोर्सेस क्या होता है? यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट। इफ आई हैड टू आस्क यू व्हाट इज स्पेशल फोर्सेस में सबसे पहला चीज आता है इसमें एक्सेप्शनल मैन पावर। सबसे ज्यादा मोटिवेटेड, मोटिवेशन की कोई कमी थी नहीं। इनफैक्ट जो भी ऑप्ट करता है उसमें कमी नहीं होती है, इसीलिए वो ऑप्ट करते हैं। बट उसमें कुछ लोग लेट्स से वो टीम का मेंबर बन सकते हैं कि नहीं। प्रोबेशन में दे आर नॉट लुकिंग एट यू एज ए सुपरमैन कि हमें रॉकी चाहिए या हमें रैम्बो चाहिए, वो नहीं है। आप यू हैव टू बी अ टीम मैन, द टीम हैज़ टू लव यू। एंड आप को अगर मैं पूछूँ कि आप अपने लिए एक टीम सेलेक्ट कीजिए अपने कोर्समेट्स के बीच में से, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे, दैट इज़ व्हाट वी वुड वांट देम टू बी। तो प्रोबेशन वाज़ रियली डिफिकल्ट। प्रोबेशन में एक 2 पार्ट है होता है। एक पार्ट है जिसमें आप को टेस्ट किया जा रहा है कि आप कब टूटेंगे, व्हाट इज़ योर ब्रेकिंग पॉइंट। Because special forces entails operating across behind the enemy lines. Behind the enemy lines मतलब आप सब तरफ से दुश्मन से घिरे हुए हैं। वहाँ पे आपकी एंड इनवेरिएबली आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सब कुछ अपने आप आपके ऊपर है। Whatever you need, you're carrying yourself. If it is for 14 days, you're carrying for 14 days. If it is for 8 days, it is you're carrying for 8 days. उसके अलावा दुश्मन से फाइट करना, अपने टास्क को पूरा करना, सर्वाइव करना, वहाँ पे कम्युनिकेट करना, एवरीथिंग यू आर कैरिंग अपने। तो इनवेरिएबली इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ जिसकी आपको रिक्वायर्ड है, मतलब टू हैव दैट एंड्योरेंस। सो यस, एंड्योरेंस बिकम्स द बेसिक और आपका एटीट्यूड बिकम्स योर बेसिक। एंड तो वो आपको टेस्ट किया जाता है कि ये आदमी टूटेगा कब। टेस्ट करने के लिए स्पेशली फॉर ऑफिसर्स, मतलब जवानों का तो एक काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर्ड होता है, बट ऑफिसर्स का वो स्ट्रक्चर के बाद में in the evenings when everybody else retires to their dormitories for preparation, जब वो पढ़ाई करते हैं, their number of test, तो उसमें आपको अलग से टास्क्स मिलते हैं।
Like I remember कल संतोष माटिक, who's no more, लेजेंडरी पर्सन हमारे 21 पैरा सर के, सर ने मुझे एक दिन में 3 बुक रिव्यूज लिखवाए थे। ओह एक दिन में वाओ! 3 बुक्स। या तो आप इमेजिन कीजिए, उस समय चैट जीपीटी नहीं होता था, तो तीनों बुक रिव्यू, एंड ही न्यू ऑल, ही न्यू इट बैकवर्ड्स, वो तीनों बुक्स उन्होंने खुद पढ़ी हुई थी, तो यू कुडन्ट फूल हिम लाइक दैट। सर तो एक बुक आप में रात 3 में, बुक रिव्यू लिखना मतलब you have to या read the book, understand the book, you have to have that यस, time by yourself in a special forces battalion to read the book, कोई concentration के साथ, ये कोई disturb ना करें, क्योंकि बुक रिव्यू भी लिखना है, फिर putting your thoughts together and then writing it on a book, वो एक ज़हनी तौर पे ही it is something else, on the level is a या सो दैट वाज वन टाइप ऑफ टास्क, जो आपको टास्क दिया जाता है, आप उसको करते हैं। और उसके अलावा एक स्ट्रक्चर जो होता है, जिसमें लाइक यू हैव गॉट स्पीड मार्चेस, जिसके लिए दे ट्रेन यू, दे प्रिपेयर यू, वंस दे फाइंड कि ये बंदा ठीक लग रहा है, एंड यू गेट 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर स्पीड मार्चेस। स्पीड मार्चेस के बाद में फिर 100 किलोमीटर स्पीड मार्च भी होता है, So, एंड देन just sorry to interrupt. I'm slightly eager to know this, and to understand this. I'm a voracious reader, sir. I love reading, and because I have to keep abreast with the current affairs, especially as a defense analyst. So, sir, I'll confess to you, honestly speaking, sir, मैं नहीं कर पाऊंगा सर, जो 3 बुक रिव्यू एक दिन में मेरे बस की बात नहीं है, और मैं कर भी नहीं पाऊंगा। I want to know, I'm intrigued to know more than the speed marches, more than the other thing. How did you manage that, sir? या यू हैव टू, मतलब आप प्रोबेशन कर रहे थे तो यू वुड हैव डन दैट, आप भी कर लेते, आई एम श्योर, बिकॉज और आपको रात को नींद आ रही है, आपने सुबह यू हैव रन 15 किलोमीटर्स विथ लोड्स, उसके बाद दिन भर आपने क्लासेस अटेंड की हैं, उसके बाद मे बी योर टास्क टू गो एंड कैच ए स्नेक। आई हैड ए स्नेक एज माई बडी, मेरे प्रोफेशन में मेरा एक सांप होता था, आई वाज टोल्ड कि आप वो सांप को हर जगह लेकर के घूमेंगे, मैं उसको साथ में लेकर के घूमता था। देन यू A आर गिवन poisonous snake, टास्क कि sir. गो कैच ए डॉग। हाँ, A poisonous snake. सॉरी, A poisonous snake, sir. yeah, it wasn't poisonous. I found out later it Okay. wasn't poisonous. Of course, yeah, yeah. But it was one of those very painful bites. It was it was a rat snake with a very painful bite. So और I सर had to अगर वो carry it. भाग गया, तो आप कहाँ पकड़ेंगे उसको? अरे कई बार वो फिर पकड़ता था उसको, बेड्स के नीचे से सारे खड़े होकर के उसको उठाते थे। एक बार घास में भाग गया, बट देन यू आर सो यूज्ड टू कैचिंग स्नेक, फिर आपको मतलब फिर ना डर लगता है, या ना आपको डर लगता है ना वो लगता है, तो यू आर गुड फॉर दैट। तो हाँ, तो उसके बाद मैं कह रहा हूँ, उसके बाद आपको जब रात में बाकी सब रेस्ट कर रहे थे, तो आपको ऐसे टास्क मिलते हैं। सो या बट देन देयर इज अ वे टू डू इट। You have a cat at आप home, sir? You have a cat at home? नो Do you have नो a आई cat at डोंट, home? नो I नो, thought I heard. I heard a kid, or I heard a cat. I heard someone. पता नहीं, और कहीं बाहर से आ रही होगी तो आवाज। ओके, नहीं नहीं, आई डोंट हैव Sir, अ कैट। sir. सो या तो आई एम श्योर आप भी होते तो उस समय आप, बिकॉज देयर इज नो वे आउट, आपको करना है। एंड जब मैं प्रोबेशन के लिए गया था, आई वाज नॉट द फिटेस्ट, आई वाज नॉट फिटेस्ट, या मतलब मेरे से बहुत ज्यादा फिट लोग थे, बट मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने सिलेक्ट होना है, नो मैटर व्हाट। Right. या आई हैव टू गेट सिलेक्टेड नो मैटर व्हाट। एंड आई वाज टोल्ड कि आप सबको मतलब यू आर स्टेइंग इन द लाइंस, और जवान्स आल्सो टास्क यू। तो मुझे टास्क जवानों ने दिया था कि आप सबको उठ करके सुबह चाय पिलाएंगे, आप सबको राम राम सर बोलेंगे। तो एज ए ऑफिसर आपको हो सकता है किसी को बुरा लगे, नहीं ये क्या बकवास है, बट नहीं, मैंने उसको भी किया, बड़े मन लगा के किया। मैं जाता था पीटी से, वो सफाई वाला सफाई कर रहा था, और जस्ट राम राम सर, मैं आपको मदद कर दूं, मैं कुछ कर दूं, एवरी डे आई वुड आस्क यू। एंड देन सुबह उठ करके सबको मैं चाय पिलाता था, नहीं सबको राम राम सर, राम राम सर, राम राम सर करके। इट हेल्प मी, क्योंकि प्रोबेशन में उस समय तो हमें पता भी नहीं चलता, बट दे टेक ए फीडबैक फ्रॉम एवरीवन। जवानों से फीडबैक लेते हैं, सबसे फीडबैक लेते हैं, आप जहाँ लाइन्स में हैं वहाँ से फीडबैक लेते हैं कि कैसा है ये, इज ही, क्योंकि फाइनली एट द रिसीविंग एंड जवान होते हैं, दे हैव टू लाइक यू, वो आपको पसंद करेंगे तभी यू गेट, दे रिस्पेक्ट यू ओनली देन दे विल फॉलो यू। Yeah, and they follow you on one of the most dangerous missions, the most dangerous uh, tasks that can be there. So for that they have to like you, so there's a very structured manner in that। Or I realized this, मुझे I was doing pretty well,
and I was a local वहाँ is local तो क्या मतलब I knew the local language and all. So मैं वहाँ पे I would get involved with operations as well. There was an कहाँ intelligence पे? officer who had taken a Where, liking. sir? We'll leave out the names of the places. Okay, okay. All right. Yeah, we'll leave out the Right, names. So there was a local right. intelligence officer and he would want me because हाँ उसको local speaking तो officer अच्छा, मिल मुझे गया। लगा आप कह रहे हैं आप वहां की लोकल थे कहीं एक ऐसी जगह पे, इसलिए ओके ओके ठीक है ठीक है, फैन ऑफ सर। Yeah. So, and I was operating. So I had just come back from an operation, or I got to know कि I have been put with the next batches में चलते हैं ना, जो आगे वाला 1 महीना लेट वाला जो पहले स्टार्ट वाला बैच था उसके साथ मुझे डाल दिया, and I had to go immediately on a camp next day. I वाह did not have the kit for a camp. वाह। तो रात को वो जो जवान सबको मैं जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर करता था, रात को 2 ढाई बजे दे गॉट अप, दे गॉट टुगेदर, उन्होंने सबने अपना-अपना सामान कंट्रीब्यूट करके दे गेव मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड। इन द मॉर्निंग आई वाज़ देयर फॉर द कैंप बिफोर टाइम। वाह सो वाह। आई रियलाइज़ सो दैट वाज़ वन ऑफ द थिंग जो मैं अगर कोई उस तरह के एस्पिरेंट है तो आई वुड लाइक टू टेल देम कि जब आपको सिंपल काम मिलता है, आप करते रहिए उसको मन लगा करके। ये मत सोचिए कि अच्छा है, मेरे डिग्निटी के बिलो है, मैं ऑफिसर हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, नथिंग। You should not. You should not. When you're giving a task, you are being go. You have to be smart. वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। यू नो दैट इवन द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी सर, जिस पलटन से मैं आता हूँ, तो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में भी 3 महीने लाइक हम लोग लाइन में रुकते हैं। I mean, though of course not probation, but it is we are with the men in the langar we are eating. We're not allowed in the officers mess. और एक rammer होता है और एक lantern होता है. The RT officers will be able to relate with me completely. तो 3 महीना कंप्लीट एक rammer और एक lantern के साथ हम लोग घूमते रहते हैं, young lieutenant, मजा आता था, मगर it was good fun. Sir. Yeah, we all remember those अपने वो समय. Yes. Sir. Sir, tell me about your first operation, the first time ever you were ever in a combat zone, in an operation. So there must have been some solid adrenaline rush in you, and you must be like that, the feeling of the thrill, excitement, yet, as you mentioned, that fear to har ek mein hota hai at the end of the day, you know. But एक खलील जिब्रान की एक बहुत अच्छी poem है on fear. So if you permit me, I'll just recite 4 lines, 4-5 lines की है sir. Please, please. Khalil Gibran in the book the Prophet, जो एक play में भी तब्दील हुआ है, in that he writes on fear. It is said that before entering the sea, a river trembles with fear. She looks back at the path she has traveled across the peaks of the mountains, the long winding roads crossing forests and villages. And in front of it, she sees an ocean so vast that to enter seems nothing more but to disappear forever. But there's no other way. The river cannot go back. Nobody can go back. To go back is impossible in existence. The river now has to take the risk of entering the ocean, because it is now that fear will disappear and the river will know it is not about disappearing into the ocean, but of becoming the ocean. ये fear पे लिखा था खलील Wow. जिब्रान ने सर. Wow, fantastic. Wow. Thank you, sir. That's beautiful. Thank you, sir. So tell us about your Yeah. first operation, sir. I was doing a lot of operations even during my probation. I was doing a lot of operations, छोटे-छोटे इधर-उधर करके, और ऐसे ही एक छोटे से ऑपरेशन में I even got shot. Oh, Yeah, but I was a gunshot wound in 6 months of service, and आपका I वो मैं had made वुड मेडल देखा था आपके रिबन्स पे, आपके मेडल्स पे इन द तो रूम. जितनी गलतियाँ कर सकता है कोई किसी ऑपरेशन के अंदर, मैंने उतनी सारी गलतियाँ की थी। मतलब उसके बावजूद 21 पैरा ने भी मुझे सिलेक्ट कर लिया। आई हैड मैं अकेले ही बहुत कुछ कर रहा था। अकेले ही आई हैड मूव्ड आउट टू कैच मिलिटेंट्स, और फिर वी विल नॉट गो इनटू दिस ये, बट आई हैड दिस काइंड ऑफ एन एक्सपोजर। But after this, when we moved into Manipur, when the unit moved into Manipur, that was a different ball game altogether. इससे पहले हमारा यूनिट जैसे वैली में ऑपरेट करता तो 5, 6, 7 मिलिटेंट्स एक टाइम पे दिखते थे। बट आप जब मणिपुर में गए, एंड नो वन नोस मणिपुर बेटर देन यू, मतलब यू हैव बीन Thank you, सो sir. थॉरो, एंड यू इवन स्पीक द लैंग्वेजेस, तो आपका तो बहुत अच्छा होल्ड है। सो यू नो हाउ मणिपुर वाज उस समय। इट वाज such large swathes of this state was a liberated zone.
और उस समय 60 60 70 70 मिलिटेंट्स एक साथ, हम मतलब पागल हो गए थे इन वन ऑफ द ऑपरेशन व्हेन वी स्टार्टेड काउंटिंग 1 2 3 4 10 15 20 30 60 माय गुडनेस। ये मिलिटेंट है या ये फोर्स है, कोई फौज है यहाँ पे? ऐसा तो नहीं है कि गलती से मतलब सम डैम आर्मी इज हियर। दे वर रनिंग देयर ओन recruitment rallies. They were running medical camps. You're already aware of those. You were generally there उस area में. So that's how it was. So उसी एक वहाँ का, I'll tell you again the way I was like christened into this type of combat, जंगल वाला, उसमें we were going to raid a camp, two camps in fact. It was like on two spurs. पीछे से हम we were like 60 kilometers from nowhere. हम 3-4 दिन जंगलों के अंदर से घुसते घुसते we had gone somewhere behind, वहां से आते आते, so that they can't guess no कहाँ से कौन आ रहा है, complete surprise. And we're going on these two spurs. And मेरे टीम कमांडर was Colonel ज्योतिन सर, शौर्य चक्र बार. एंड दूसरे वाले में was कर्नल नेक्टर, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र. अरे So sir, he was there, I've yeah. operated with Nectar him. sir was the I've other operated one. with him, with इसमें Nectar. you have, yeah, You yeah. know the story, sir. जो वो कैप्टन साहब थे. Yes, yes. Both of them in fact they are legendary. और हमारे साथ और एक legendary figure थे, मेजर भूपेंद्र धमानकर. अरे तो of टीजे course, सर, of course, धमानकर सर और मैं. Yeah, of yeah. course. And we were going to raid these camps, and we were about 200-300 meters short of the camp, and suddenly boom, there's a blast. फर्स्ट स्काउट निकल गया, सेकंड स्काउट वी सॉ, मतलब आप इमेजिन कीजिए आपके सीलिंग फैन से अबाउट लेट्स से 5 odd meters हाई, टांगे वहां पे, एंड दिस गाय जस्ट फॉल्स डाउन हेड टॉप. देयर वाज आईडी. We looked around, there were number of pressure IDs of this kind, like they are mines. सिंपल सा इम्प्रोवाइज टेक्निक, ऐसे बैम्बू को मोड़ करके, ठीक है, यहाँ एक मेटल पीस, यहाँ एक मेटल पीस विथ वायर एंड अ स्मॉल बैटरी, लिटिल एक्सप्लोसिव. एनीवन स्टेप्स ओवर इट, टप, एंड यू गो अप. I didn't know what to do. सीरियसली, मतलब ऐसे में आपको लग रहा था कि अगला कदम में आप उड़ जाओ. somebody said साहब यहाँ है, साहब साहब यहाँ भी है, साहब यहाँ भी, एकदम कोई हिलो मत. And then I saw how teachers got over it. मतलब nothing doing. अच्छा, as this was happening, you're 200 to 250 meters, and now the militants, they have also heard the blast. They know something has happened. It could either be a जंगली जानवर, हो सकता है जानवर रहा हो सकता है कि इंसान रहा हो, तो probably they were not sure. But उसी समय 10-15 minutes के अंदर Nectar's party got into a contact. We had a casualty there. Yeah, and then we also got some success. तो वो हो गया. तो जो भी इनके दिमाग में कुछ था कि it could be a foe army, it may not be an army or whatever. So they know the troops are here, army is here, and they are going to come looking for you. Yeah, because पूरा एरिया उनका है. हम गए हैं वहां पे, वो तो 60-70 में, we were much smaller force. And then we just, अच्छा, next thing, when you're walking in a jungle, you can still find your step कि आप देखते हुए कि कहीं साला नीचे आईडी तो नहीं है. But when you're carrying someone, you need about 7 to 8 people to carry one guy. And आपके steps, we are not talking about a road, we're talking about a jungle जहाँ पे vegetation है, up down, इधर उधर, है कि नहीं, all 8, so that you keeping. And that guy was completely ice, मतलब you could see वो पूरा उससे ना कचरा घुसा हुआ था, उसके legs were like gone. And we got him. हमने उठाया, said nothing doing, move. Too bad if somebody else gets into a blast, we will just take the chance. And we moved like that. And we hit the camp. There was a huge firefight, and then TSS party had to move, and all that, all this thing was happening. Now with the casualty for the night, we stayed back in that particular village. We had to, क्योंकि आपके पास casualty है, रात को अगर हम बाहर रखते, वो he wouldn't have survived the night, ठंड में. तो we had to keep fire, और आग जला करके. सो गांव के अंदर एक जगह हमने ठीक से अपना पोजीशन बनाया. गांव which was a camp which was being used by the militants, वहां पे हमने जाग जला करके keeping him there. And the other part is रात भर वहां पे there was a firefight. And now the militants whom we had thrown out of this place, they knew precisely उनका तो ये target था, उनका तो ये कैंप था. Whole night they kept attacking. We kept changing position. वो छोटे से फट्टे के पीछे लेट करके we kept firing back. And then I remember that night, I was initially scared, but then उसके बाद you're not thinking of that. Every time you hear some noise, आपको लगता है कि वहां पे कुछ है. There's somebody, and then somebody fires from there. There's a grenade that's falling near you.
And yeah, that was like that. I'm not never going to forget that night. Yeah, just praying for the morning. Morning happened. We were waiting for helicopters. के helicopter आके casualties को ले जाएंगे. But weather इतना खराब, helicopters could not come. When helicopters could not come, so there's another 20-30 kilometers by road. We had to carry those casualties and get them back. We fired upon रास्ते में वापसी में, but somehow God was kind. We reached back safe, and we did have success in that. Yeah, Yes, sir. so Wow. yeah, that I consider as one of the operations जिसने मतलब which uh, जिसने introduce किया था firefight and things like this. Wow, sir. Wow, wow. So you have been in thick of action, and you've also commanded an NSG battalion, the Special Action Group. So how different did you find the commandos of the Special Forces and the commandos of the NSG, sir? एनएजी का रोल टास्क इज कम्प्लीटली डिफरेंट. Hmm. या बट जो स्पेशल फोर्सेस यूनिट वाले होते हैं ना, दे आर लाइक अ ब्रदर्स. मतलब उनके साथ तो आप इतना टाइम यू हैव स्पेंट, यू हैव ग्रोन अप टुगेदर. वो तो कैजुअली व्हेन यू आर सिटिंग, इवन जवान विल कम एंड सिट विथ यू आराम से. मतलब उस टाइप का, एंड दे कैन टेक लिबर्टी. एंड अगर क्वालिटी में आप वो देखें, somebody who chooses special forces, he has chosen special forces for life. He's part of that regiment, he's part of that unit, he's going to be there throughout. Whatever he does, his actions or lack of it or whatever is going to stay in that unit like a legacy throughout. उसके हो सकता है कि children join. आप समझ रहे हैं? तो he's part of that unit. तो वो अलग है. NSG is a deputation force. सो एनएचजी के अंदर लोग जो जिनको स्पेशल फोर्सेस फॉर लाइफ वाला मौका नहीं मिलता है, बट हु येट वांट टू बी, हु हैव गॉट फिट. देखो, नोबडी कैन जस्ट ऑफर एनएचजी अनलेस ही इज एक्सट्रीमली फिट एंड सुपरबली फिट. अलग अलग आपके सर्विस ब्रैकेट के अंदर एज ए जेसीओ समबडी ऑप्टिंग उस उम्र में आपको उतना फिट होना, या तो इट दैट आल्सो रिक्वायर्स लॉट ऑफ मोटिवेशन. और फिर दे आर देयर फॉर अ डेपुटेशन. जवान 3 years के लिए आता है और वहां पे आप 3 years के लिए यू आर गिविंग योर बेस्ट एंड देन यू गो बैक. सो देर इज अ डिफरेंस इन द, थोड़ा सा वो है. एंड एनर्जी के अंदर इट्स people from different arms, not arms, they're all infantry, especially जो special action group जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, there are special composite groups, yeah, जिसमें there's a mix of army and CAPF. So I'm talking about the special action group जिसमें they are a mix of all infantry regiments. उनकी अलग अलग upbringing रही है, अलग अलग जगह उन्होंने काम किया है, तो it brings to you lot of varied experience. बट हाँ, बिल्कुल अगर आप कॉम्बैट के लिए वो कहते हैं तो जिसमें थोड़ा सा गैप है, बिकॉज स्पेशल फोर्सेस उसने 10-15 साल क्या किया है, उसने सिर्फ ऑपरेशंस किया है या ट्रेनिंग किया, और कुछ तो किया ही नहीं उसने. उसको आप टेंट लगाने के लिए बताइए कहीं पे, ही वोंट बी एबल टू डू दैट. या नॉट द सेरेमोनियल काइंड. सो it's like that. But if I have to talk about energy, the task is very challenging. In fact, मेरे लिए I commanded the only counter hijack and a sky marshal unit in the entire country. So अगर देश के अंदर कोई भी हाईजैक होता है, it is that one unit that is going to respond, which itself is it's a huge responsibility for the group commander, or as the commanding officer is called. You know, why we do not have more counter hijack units? Because जो counter hijack operation है बहुत ही precise और delicate operation है. Right. A hijacker with a ग्रेनेड सबसे अच्छा आसान है स्मगल करने के लिए. एक ग्रेनेड के साथ में और छोटे से एक्सप्लोजिव के साथ में, मतलब द एंटायर एयरक्राफ्ट विल गो अप इन फ्लेम्स. आप समझ रहे हैं? मतलब 2 सेकंड आपने वेस्ट किया है, somebody just realizes there's a counter hijack force that has gone, he just has to press that damn switch or take the pin off and the entire aircraft goes into flames. It can be that worse. मतलब ऑफ कोर्स ऐसे नहीं कि कहीं भी आपका ग्रेनेड फट जाएगा तो एयरक्राफ्ट विल गो अप. देयर इज अ फ्यूल टैंक कहाँ पे है, कैसे है, उसके ऊपर आपके बंदे कहाँ पे हैं. I keep narrating this incident to tell you how delicate the operations is. GIGN ने एक ऑपरेशन किया था 1994 में. There was a Air France aircraft that was hijacked and it landed in Marseille. और Marseille के अंदर when this aircraft landed,
So GIZN was stationed there. Good about 2-3 दिन उसके negotiation चल रहे थे, and GIZN conducted a live training in the same. It was a Airbus 300, और Airbus 300 के अंदर live training किया उन्होंने पूरे एयरक्राफ्ट का जो हाइट होता है ना, जिसके अंदर रैंप लगा करके यू एंटर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ काउंटर हाईजैक ऑपरेशन। तो उन्होंने पूरा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, और जब लाइव ऑपरेशन किया, when they were actually conducting that operation, there was a problem. You know what the problem was? The problem was इस एयरक्राफ्ट के अंदर जिसमें हाईजैकर जो जिसमें वो थे, उसमें पैसेंजर्स भी थे, एंड बिकॉज ऑफ द पैसेंजर्स द वेट, the door, the height of the door was this much. There's a difference of this much made Right. that kind of a difference, because आपका जो रैंप है वो रैंप डोर के ऊपर लगा, and the door wouldn't Right. open. These are all there in the YouTube के videos हैं, the commando struggling to open the door and the door is stuck, तो वो नहीं खोल पा रहे हैं. It gave them 4 to 5 seconds, जिसमें commando falls off, he tries, and this 4 to 5 seconds में everybody realizes कि the counter hijack force is there, and these hijackers they get into the cockpit. वो cockpit के अंदर छुप जाते हैं, और cockpit के अंदर छुप करके जो बुलेट प्रूफ डोर होता है वहां से firefight, it becomes nasty. Oh God. So GIZN got about 18-19 casualties इस ऑपरेशन के अंदर. मैं आपको मतलब उसका डेलिकेट, कितना डेलिकेट होता है काउंटर हाईजैक ऑपरेशन, वो समझाने के लिए, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट कैन हैपन, जो मैं मतलब ऐसे इस प्लेटफॉर्म में द थिंग्स व्हिच इज नॉट एप्रोप्रिएट कि मैं डिस्कस करूं. Yeah, but because of that, yeah. So counter hijack, sky marshal, उस टाइप के, if there are 2-3, we prepare for as many, मतलब आप जितना कीजिए. The biggest regret in me मेरे लाइफ में कि यार रहते समय कभी हाईजैक नहीं हुआ, मतलब I kept praying. I would say this. Thank God. Yeah, Thankfully. 18 hours a day. Yeah, 18 Thankfully. घंटे आप दिन में you're training, आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं कि हाईजैक होगा, Thankfully. हम कुछ करेंगे, हाईजैक नहीं हुआ. Thankfully, sir. Thankfully. Yeah, But I that's of course on understand the the lighter rest. side. I know, on the lighter side, exactly, sir. That I know the rest. You know कि अब ट्रेनिंग कर रही है, एक्शन दिख रहा है, वो एक्शन दिखे, देखो मिला नहीं. Like I've been very very fortunate and lucky, sir, कि मैंने 2 साल जम्मू कश्मीर में काटे, उसके बाद बाकी नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में काटा मैंने, और असम राइफल्स देखने का भी मौका मिला, ऑपरेशन भी देखे. तो बहुत, अगर मैं वही 5 साल करता फौज में, had I got some peace postings, for example, so I would have definitely have left the army with a lot of grouse and a lot of regret, and I would have been very upset about it. कि भाई अगर दिल्ली में ही पोस्टिंग चाहिए थी मेरे को, तो मैं जनपैक्ट में काम कर रहा था, अच्छा अच्छी भली नौकरी कर रहा था मैं, I would have continued. तो फौज में क्यों आया फिर मैं? So and you know my zest, you know the story. I was a hardcore SF opti. Yeah, Right from academy. I know. So We were trying to get you into 21 para SF. Sir, thank you, sir. We had a place ready for you. Thank you, sir. I tell you, when I meet an SF officer, मैं इतना awe में होता हूँ. When I see the maroon beret, आज भी, not that I take great pride in the artillery as well, but when I see the maroon beret, ये मेरी ख्वाहिश थी सर. तो मैंने maroon beret रियल लाइफ में तो नहीं पहने, मगर मैंने एक पैरा कमांडो की भूमिका निभाई थी ऑन स्क्रीन in a web series called Avrodh. I played a para commando who goes across for surgical strikes. Okay. उसका करी मैंने. Oh, that's interesting. I'm sorry. That's the first thing I'm going to do. नहीं. No worries on that, sir. तो जब भी मैं ऐसे ऑफिसर से मिलता हूँ, I really एक रश मिलता है मेरे को, सर. जी आप बहुत दिलचस्प के साथ सुनाए, सर. And then after you finished your command from NSG, sir, you went as deputy commander of a very prestigious brigade, in fact, and you were up north. And yeah, so I was up north. I was generally ये mothers का होता है ना, they keep trying to study कि वहाँ पे क्या हो रहा है. तो she has pointed out कि जहाँ पे action होता है वहाँ पे मैं जाता हूँ. So that's because special forces में हम जब 21 में भी थे, तो they know कि मणिपुर में हंगामा हुआ है, and you gave a call and अच्छा तू वहीं पे होगा पक्का. Then something happens in some part of another state, and then you are there. So that's again on the lighter side. So they feel it like that. Energy वैसा नहीं था. और हाँ, उस समय we just got over the Galwan issue and all, and Pangong Lake के पास में I was deputy commander 114 infantry brigade, and in Tangse. So that was a good war. But then
वो हाई ऑल्टीट्यूड वाला एक चीज़ था जो लाइफ में मेरे मिसिंग था। मतलब आई आई वुड से मेरी आर्मी की बिल्कुल जितने भी ऑपरेशंस कर लिए हैं, जो कुछ भी कर लिया है, मेरी आर्मी की अंडरस्टैंडिंग कि कितने मुश्किलात में, कितने डिफ़िकल्ट उसके अंदर हमारे फ़ौजी काम कर रहे हैं। हमें लगता था कि ये सिर्फ़ ऑपरेशंस आर मतलब इट्स 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 समथिंग ऑफ इमेंस वो, बट दैट इज़ डिफरेंट नेचर के अगेंस्ट। एंड नेचर इज अनफॉरगिविंग। नहीं, वो दैट कोल्ड, those challenges you can't, and that everybody, the entire core deployed there, हर जवान वहां पे, मतलब ऐसा नहीं यहाँ पे तो आप ऑपरेशन के लिए गए, आपके चार ट्रूप्स अलग अलग गए हैं, मे बी दो के साथ कांटेक्ट होता है, बाकी दो विल नॉट सी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो एवरीबडी इज गोइंग टू सी यार, एवरीबडी हैज टू गो थ्रू द एंटायर डैम, उसमें सत्री ड्यूटी देना, such big challenges, and hats off to the Indian Army. I mean, yeah. Sir, that's very nice. Sir, you hung up your boots in June last year. In fact, I would call it last year because अभी 2024 में हम आ चुके हैं. What's been the journey been there so far? And we know you are running a very, very successful enterprise, and you are doing your own into art. You are heavily into artificial intelligence and AI, and so we would like to know more about your venture after you have left the forge, after you retired. I would say after you took premature retirement. I would say, and how has Forge helped you with your second innings now, sir? I'll speak about how Forge has helped me. Forge ने कैसे मदद की है मेरी, जो भी हूँ मैं आज, जो कुछ भी सोचा है, the way I think, everything is because of the army. मतलब आर्मी से पहले तो I can't even think कि मैं सोचता भी था कि मैं क्या करता था. Yeah, whatever I have done, whatever, now I go to a place and people listen to me, people call me, invite me for talks and all this. It's all completely for the army. And the entire perception, everything that I have experienced, everything that I have learned, whatever little I have learned, sab kuch, everything I owe it to my unit, my army. Yeah. So मेरा जो ये venture है, it is generally I'm trying to drive a concept of remote security. या रिमोट सिक्योरिटी का ये कॉन्सेप्ट जो ब्रॉडली आई रियलाइज, ये भी आर्मी से ही इंस्पायर्ड है, क्योंकि व्हेन आई वाज कमांडिंग 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप, दैट्स व्हेन आई रियलाइज मेरे काफी सारे, आई विल नॉट गो इनटू द नंबर्स कितने लोग डिप्लॉयड होते हैं, बट गुड नंबर ऑफ पीपल वेर डिप्लॉयड टू गार्ड द पेरीमीटर। बिकॉज आप जितने भी अच्छे हैं, आप ऑपरेशंस में अच्छे हैं, वे यू गो ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ टास्क, somebody comes and attack you here, it's an underbelly, you may not be as strong in handling, आप समझ रहे मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ. So Yes, sir. Yes. this needs to be guard. So to guard this, I was using so much of manpower, and I realized energy के अंदर, again it is another special forces unit, so आपको फालतू का समय नहीं है, आपको जो करना है, आपको सिर्फ ट्रेनिंग करना है. So वो बंदे वहां पे खड़े टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे. So that thing has been on my mind. How can I automate the entire place? Because there's already a wall. Somebody is going to climb that wall and come inside. No. So if somebody climbs this wall and come inside, so there can be gadgets to identify that and bring it to your platter. आप अपना एक QRT रखिए 5-10 आदमी का, and you just see कि okay, यहाँ से there has been a breach. Has there actually been a breach? Is it an animal or is it a actual कुछ breach हुआ है? अगर breach हुआ है, so 5, 6, 7 people armed, unarmed, or is it just one of your jawans who had probably gone out to meet his girlfriend और वापस आ रहा था क्योंकि वो गेट से नहीं जा सकता था, वैसा था, या कोई अपना बंदा, या somebody armed who has come inside. If he's come inside, where exactly has it gone? The technology to track कि okay, यहाँ से आया था, यहाँ पे गया है. Then you waste so much of, आज के जमाने में you waste कि आपकी गाड़ियां आ रही है, वो एंट्री कर रहा है कि हाँ कहाँ जाएगा, किसने ऑर्डर दिया है आपके गेट पे कि कौन सी गाड़ी अंदर. एवरीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड. लाइसेंस प्लेट आपका ऑटोमेटिकली रीड करे, आपके बूम बैरियर्स ओपन हो, देयर इज नो पेपरलेस एंट्री, पेपरलेस वो आपके सारे फेशियल रिकॉग्निशन से लेकर. सो दीज आर थिंग्स दैट गेव मी आइडिया, और this is precisely the kind of solution that I'm trying to provide. We have made solutions for smart societies, smart townships, जिसके लिए ना completely to make them paperless. We've got parking. I realized parking का directly because we already had a solution that just has to be implemented for parking. So again, parking का जो वो है कि in there are places आज के डेट पे
जहाँ पे 50 to 60 people are employed just to man your parkings, and all of these basement parkings में multi level parking होती है. वो कोई रेडियो सेट से बता रहा होता है कि यार इसमें खाली है, इसमें भेजो, इसमें खाली है, कोई लेन क्लोज कर रहा होता है, कोई खोल रहा होता है. Every damn thing can be automated. This just can be managed by about 5-6 people to make the entire. So these are things that we have started with our. It's just application of mine and trying to build जो utility है. और ऐसा भी नहीं है कि these things are not available in the market. They are. So this is the concept that I'm trying to drive in. So that's so interesting. Sir, it's been such a wonderful conversation with you, sir. मैं क्या बताऊँ, इतना मजा आया आपको सुन के. मैं दिल कर रहा था कि बस सुनते रहो, आपको सुनते रहो. So, and I know I have taken too much of your time, and I have extended the time that I had promised you. उसका मैं double ले लिया है. Sir, but जाते जाते, any last message from your side you would like to throw out in the universe, sir, from your side? Anything, just anything for anyone, sir. Yeah, I would urge this. I keep telling everyone. I would urge everybody to strive to be strong. Yeah, because I have realized कि you get respected only when you're strong. That's true, sir. As a country, अगर देश को आज respect है, otherwise आप if the country is not strong, they're going to treat you like Pakistan is being treated today कि कोई भी जाके missile attack कर दे. Correct. It cannot happen. Correct. Yeah, Correct. so you need to be strong, and for a country to be strong, all the citizens have to be strong. So if I have to give a message to everybody, I would urge everybody to please be strong, to try and be strong. आप अगर strong है, and you don't actually, I'm not just talking about physical strength. Physical strength is just एक चीज है जो आपके mental strength से आता है. Your ambitions, आपके aspirations, आप जो भी करते हैं, but try and make yourself capable, try and make yourself strong, and make in India that's the way to be. क्योंकि आप जब तक otherwise you are always dependent on others. Yeah, so ये तो छोटी-छोटी चीजें हैं, but yes, if I'm going to urge or give a message to everybody to be respected, the universe respects strength. So if you want to be treated with dignity, with respect, be strong. Absolutely. I think that's absolutely. Very fine message, sir. Very fine message. And sir, thank you so much for your time, and it's been really wonderful, sir. Such an honor, sir, to be speaking to you, sir. Thank you very much. Thank you so much, Ali. You've really made me very comfortable, and I look forward to more interactions with you. Thank you so much. Thank you, sir. So 47 minutes हो गए, आपको मालूम नहीं पड़ा होगा बिल्कुल भी गुफ्तगू में. Not at all. Not at all. Right, sir. Thank you very much, sir. Jai Hind, sir. Thank you. Yeah, Jai Hind.